Good morning, students. In the previous lecture, we studied about the electric field due to an electric dipole. So, in the previous lecture, we studied the electric field due to an electric dipole in equatorial condition. So, today we are going to study torque on an electric dipole in a uniform electric field. So, let us see that the topic is torque on an electric dipole. In a uniform electric field. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टार्क जो अप्लाई होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा और कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम टार्क जो 11th क्लास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में स्टडी किए थे उसके बारे में कुछ समझते हैं। यहाँ पर हमने सपोज किया है दिस इज अ रॉड and some forces are applied on it. If two forces are in same direction, then rod does not rotate. मतलब अगर टू फोर्सेस को हम एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ये रॉड रोटेट नहीं करेगी। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर कोई रॉड है और एक ही पॉइंट पर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, टू फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मीन्स इनका पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, तब भी यहाँ पर टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, अगर किसी भी रॉड पर टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है बट उनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब भी टार्क अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? सो what will be the condition to produce the torque on an electric dipole inside the electric field? So these are some conditions by which any object rotate inside the electric field or anywhere. If two forces applied, let us assume that this is an object, two forces applied. First is there will be two force. Second thing is magnitude of force is same, magnitude of force is same. Third, direction is opposite. And fourth is point of application are different. Point of application is different. क्लियर? तो यहाँ पर किसी भी रॉड के रोटेट करने के लिए ज़रूरी है ये 4 पॉइंट्स। अगर इन 4 पॉइंट्स को कोई भी सिस्टम फॉलो करता है देन दैट सिस्टम विल रोटेट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर इफ वी एज्यूम वन फोर्स इज हियर एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज एफ एंड वन फोर्स इज हियर, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज एफ। सो हियर फोर्स इज एफ and also here force is F. So we can say the magnitude of these forces are equal. So two forces are present here and magnitude of two forces are equal. And third point, direction is opposite. So here direction is also opposite. Third point will follow in this case. And fourth point, point of application is different because
this force is applied at that point and this force is applied at that point. So here point of application of these forces are different. Point of application भी different है. Same कब होगा point of application? जब एक ही point पर two forces लग रहे हों. यहाँ पर point of application इन दोनों pair of force के लिए क्या है? Same. But यहाँ पर क्या है? Different. So these are the conditions that follow the system, then this system will rotate inside the electric field. So here we draw the diagram to calculate torque on an electric dipole. So first of all we make the diagram of electric dipole inside the electric field. In the previous part we already studied if electric field lines are parallel. Electric field lines are parallel, then that field lines represent uniform electric field. Clear? This is the property of electric field lines. And one property is electric field lines is always start from positive charge and end at negative charge. So here we mark the sign positive and here we mark the sign negative because these are the electric field lines. If we place an electric dipole, whose axis making an angle theta with the direction of electric field. Which type of electric field? Uniform electric field. Let us assume that there is a charge minus q and there is a charge plus q. So here two forces applied on these charges because the electric field. So this negative charge applied on that force, in the right side one force, that is F, and here in the left side that is F. So here we observe that on the electric dipole there are two forces. One is here and one is here. This force is applied on positive charge and this force is applied on negative charge. And the point of application of these forces are different. Direction also are different of these forces. So here we make a diagram. If we extend this line and draw a perpendicular from positive charge on that line and assume that this point is A, this point is B and this point is C. Because this line and this line are parallel, so this angle and this angle are corresponding angle. So here we write also angle theta. Clear? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द प्रीवियस टॉपिक द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टेकन एज 2L R2A. So here we write 2L R2A where 2L is the length of an electric dipole. So the general formula of torque is either force multiplied by perpendicular distance between line of action of force. This is a general formula that we are studying in class 11th in the chapter System of Particle and Rotational Motion. So we use this formula and calculate the torque on an electric dipole inside the uniform electric field. So here we observe that this is a line of action and this is also known as line of action of the forces, and this BC is known as perpendicular distance between line of action of force. So here we derive the formula of torque, and formula of torque is PE sin theta.
सो वी स्टडी वन बाय वन, स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करेंगे। क्लियर? वन थिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडी द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, that is E is equal to F by Q. So here we write F is equal to QE. मीन्स अगर हम किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, उस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये चार्ज कहाँ पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में, इस पर लगने वाला फोर्स निकालना होगा। तो इस F की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू E। इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स अगर निकालेंगे तो वो भी वही होगा Q इंटू E, क्योंकि ये चार्ज भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो दोनों चार्जेस पे फोर्स की वैल्यू QE होगा, जिससे ये क्लियर होता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर? सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज। The electric force on charge of dipole is F is equal to QE. This is equation first. Clear? So first of all we calculate the force on the charge inside the electric field, and second thing is what is the perpendicular distance between the line of action of force. So we calculate the perpendicular distance, that is VC. So in triangle ACB, this is a right angle triangle. From right angle triangle we calculate the perpendicular distance. So here we calculate VC, and in this triangle only the side given AB. So here we correlate these two sides and we get the perpendicular distance between the line of action of force. We write here BC upon AB is equal to, so here this is a perpendicular and this angle is 90, so it is hypotenuse. So here we write BC upon AB. So BC upon AB is equal to sin theta. So here we write sin theta, and AB is also equal to 2L because AB is a length of an electric dipole. So here we put BC upon 2L is equal to sin theta. So we write BC is equal to 2L sin theta. This is equation second. So now we calculate the torque on dipole. So torque on dipole, using this concept, either force means इस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, जो यहाँ पर हमने निकाला है। तो यहाँ पर फार्मूला हम क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू बी सी। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से एफ की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से बी सी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में सब्सटीट्यूट करना है और हमें टार्क का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड and third, we get tau is equal to QE multiplied by 2L sin theta. Again we write 2QL multiplied by E sin theta. So here 2QL is equal to the P, because this is an electric dipole moment. So here we write tau is equal to PE sin theta. क्लियर? कोई भी डेरिवेशन है वो केवल 3 ही स्टेप में आप कंप्लीट कर सकते हो। फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन आप 3 स्टेप में कंप्लीट करोगे। कैसे? फर्स्ट, व्हाट विल बी द गिवन, सेकंड, व्हाट फार्मूला वी यूज्ड, and put the value given in the formula and we get the relation
which we describe in the topic of the physics. So here this is the expression of the torque which will be calculated. One more thing, the definition of electric dipole moment is asked in the board examination from this formula. So we define the definition of electric dipole moment from this relation. So now we define electric dipole moment. If sin theta is equal to 1, so 1 is the maximum value of sin theta, so we write tau is equal to tau max. Clear? So here we write tau max is equal to PE, or P is equal to tau max upon E. If E is equal to 1, then we write P is equal to tau max. So from this relation we say that the definition of electric dipole moment, the maximum torque applied on an electric dipole inside the electric field is known as electric dipole moment. What is the definition of electric dipole moment? The maximum torque applied on an electric dipole inside the electric field is known as electric dipole moment. So the definition asks more time in the board examination, only the definition as well as derivation along with definition. So this topic is very important for upcoming examination. So please prepare this topic. So now in the next lecture we study about the continuous distribution of charges. Thank you so much. Have a nice day.